Hey guys, welcome to the HTML session. In previous lesson हमने बताया आपको कि कैसे हम attributes table tag में use करते हैं, right? Like what is call span, row span, cell padding, cell spacing, border align, fine, okay. So उसके बाद अगर हम इसमें आए लेक्चर 14 में, तो हम लेक्चर 14 में देखने वाले हैं कि HTML में लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इन HTML. So basically it is used to display the data in a sequential order. अगर हमको डाटा को सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिखाना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम लिस्ट टैग का लिस्ट का यूज करेंगे. ओके, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट. कौन कौन से लिस्ट होते हैं? फर्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट, सेकंड वन इज अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड वन इज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट. सो individually one by one we will see in this lecture what is order list, unorder list and definition list, and after that we will wrap up this session. Okay, so what is order list? So this list is used to display the item in sequence. So if you want to display the item in a sequence, so आपको ये order list use करना है. Fine. So order list is what? दिस लिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग टैग्स. अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमको कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट का टैग बनाएंगे. फाइन. उसके अंदर एक लिस्ट टैग बनाएंगे. लिस्ट टैग उसके अंदर हम लिखेंगे HTML. ठीक है, मान लो कि हमको HTML दिखाना है कि हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है HTML. ठीक है, उसके बाद हमको दिखाना है कि इस सेशन में हम CSS भी कवर करेंगे. ठीक है, लेट्स से CSS भी कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये डाल दिया. उसके बाद हमको दिखाना है कि हमको जावा स्क्रिप्ट भी कवर करना है. ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट डाल दिया. तो बाय डिफॉल्ट ये जो है, सबसे पहले क्या हुआ, ऑर्डर लिस्ट टैग एग्जीक्यूट हुआ. उसके अंदर हमने क्या किया, अपने जो डिस्प्ले करना है हमको अपने वेब पेज पे, उसको हमने इंसर्ट किया. उसके बाद ये ऑर्डर लिस्ट टैग क्लोज हो गया. ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर जितना एलिमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा. तो इसका क्या आउटपुट आएगा? सो आई विल कॉपी this whole thing and move to paintbrush to show you properly. So इसका क्या आउटपुट आएगा? जैसे ये जो होल थिंग है, तो इट विल बी डिस्प्लेड इन नंबर. तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा आउटपुट आएगा, 1 HTML. ठीक है, 2 HTML, 2 CSS, सॉरी 2 CSS एंड थर्ड वन इज व्हाट, जावास्क्रिप्ट. ओके, अगर मान लो इस 1 की जगह हमको ए लिखना है, ABC के फॉर्म में, तो हमको यहाँ पे टाइप एक इंसर्ट करना पड़ेगा, उसका लिखना पड़ेगा ए. ठीक है, अगर मान लो कैपिटल ए डालना है तो टाइप इज इक्वल्स टू कैपिटल ए. तो ये सब हम विजुअल स्टूडियो कोड में अभी देखने वाले हैं. सो वी विल क्रिएट वन फाइल नेमिंग व्हाट, ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML is extension. Okay, so inserting the boilerplate of HTML. Fine. So in body section I am inserting one h1 tag. Inside this h1 tag I am like writing what, ordered list. Okay, ordered list. Fine. So अब हम इसमें बताएंगे कि ऑर्डर लिस्ट में क्या क्या हम यूज करेंगे. सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, हमको एक ऑर्डर लिस्ट इंक्लूड करना है. उसके अंदर एक लिस्ट टैग को इंक्लूड करना है. उसके अंदर हम डाल देते हैं, लेट्स से HTML डाल दिया हमने, HTML. ठीक है, उसके बाद हम एक लिस्ट टैग और क्रिएट करेंगे. ठीक है, उसको पेस्ट करेंगे. उसके बाद ठीक है, ये तीन चीज हमको डिस्प्ले करना है. तो हम देखेंगे इसको कि ये कैसा ओरिएंट कर रहा है हमारे वेब पेज पे. what JavaScript, and we will save this application, copy the path and paste it to Chrome. Fine. So here see HTML, CSS and what, JavaScript. ये 1 2 3 डिफॉल्ट में है, ये मैंने आपको अभी समझाया है नोटपैड पे. अगर मुझे इसके जगह चाहिए what, अगर मुझे इसके जगह चाहिए कि मान लो कि मुझे चाहिए A, तो इस OL टैग के साथ मैं लगा दूंगा यहाँ पे टाइप इज इक्वल्स टू, देखो 1 हम लगा सकते हैं, 1 इज व्हाट, डिफॉल्ट फॉर्म 1 2 3 4. ए अगर लगा के देखें तो क्या आ जाएगा, देखो ABCD के फॉर्म में आ जाएगा वो. सो इंडिविजुअली वन बाय वन वी कैन अप्लाई, लाइक ABC आ गया कि नहीं. प्रीवियसली व्हाट वाज हियर 1 2 3 एंड नाउ इट इज व्हाट ABC. ओके फाइन. तो इसी तरह स्मॉल ए लगा सकते हैं, स्मॉल बी लगा सकते हैं, स्मॉल सी लगा सकते हैं. फाइन, you got it. What is order list? So order list is used for what? Order list is used for displaying the data in a sequential order, right? Now moving on to unordered list. What is unordered list? Okay, so similarly like ordered list, what is unordered, what's a list, unordered list? So moving to unordered list. So what is unordered list?
So this list is can be used to display item with no order. Fine, so we will be seeing what this no order thing means. Okay, so what is the second form, इसको कैसे हम originate करते हैं. So इसके इसमें सबसे पहले ये अनऑर्डर लिस्ट टैग इंक्लूड होता है. इनिशियली सबसे पहले ये अनऑर्डर लिस्ट टैग ये होता है. इसके अंदर हम लिखते हैं व्हाट यू इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अनऑर्डर लिस्ट. फाइन, उसके अंदर हम क्या इंसर्ट करते हैं, लिस्ट, जो कि एलिमेंट होता है. क्या होता है, एलिमेंट होता है. फाइन, सो व्हाट इज दिस, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द list item. Fine, got it. So like an ordered list, here ul tag is used for unordered list and ol tag is used for ordered list. Fine, so unordered list के लिए कौन सा टैग है, ul tag. Okay, और ordered list के लिए कौन सा टैग है, that is ol tag. Fine, so these are not self closing tag, you need to close this also. Fine, so in one more thing, in order to change the list symbol, we use what, list style type property in CSS. So this thing we will be discussing in CSS, so don't focus on this, just write it in your lecture note. We will be discussing in CSS. Okay, so let's see one example on unordered list. So what I am going here with unordered list dot html. Okay, so I am inserting the boilerplate. Fine, in this body section I am inserting one h1 tag for, and I am writing what, let's say working with unordered list. ठीक है, working with unordered list. Fine, so what is unordered list? So here I will insert one unordered list tag, ul tag is for what, unordered list. Fine, inside this I will be inserting one list tag, how much thing I want to. So similarly in previous example, likewise I am inserting one html. Okay, I am inserting one css and I am inserting one javascript. Fine, okay, so this is what, let's say css, and this is what, javascript. Save this application, copy the path. Here see, this is of ordered list and this is of what, unordered list. We will see the difference. Here you can see there is no symbol, right, 1 2 3 4 is not there, there is just dot. Like this means that here you can see abc and here is what, dot dot dot. That is the only difference between unordered list and ordered list. Now the third type of list is what, the third type of list is also called definition list. What is that, definition list. Definition list which is also called as description list. What is description list? Means if you want this list is used to display the item with details. This list is also called description list. Okay, so writing some points related to this list. So this list is used to display the item along with detail. Okay, along with detail. Fine,
So this list includes what? First thing is what? Description list, that is DL. Like this is used to represent this, what? Represent definition list. What? Definition, or you can say description list. Okay, fine. So this is what? DL. Now the second thing is DT. DT is what? DT is something like represent definition, represent definition term. Represent, we will be seeing what is that. Represent definition terms. Okay, so this is what? DT. And the third thing is what? DD, मतलब definition data. ये किसके लिए यूज होता है? Represent data, represent data description, represent data description. Okay, fine. We will be seeing what is definition list. So we will be moving to Visual Studio Code and make one file of what? Description list dot html, inserting one boilerplate. Okay, so writing what? One, I will give one heading. So I will give what? Example related to definition list. Okay, fine. So inside this I am what? I am representing what? Definition list. So for representing definition list I am giving what? DL tag. Okay, so DL tag, inside this DL tag, I am inserting what? DT tag. Okay, what is DT tag? Before this I want to explain one thing to you, like syntax of this. Okay, syntax of using this is like, first DL thing is there. Inside this DL thing you have to insert one DT thing. Like for what term? I will give, come up to you. Okay, so inside this, like I say, like HTML, fine. So I want to write something about HTML also. I want to don't show like this only HTML. I want to write something like, what, say a full form. Let's say full form of HTML: hypertext markup language. Hypertext markup language is what I want to represent along with HTML in my web page. Okay, fine. Hypertext markup language is what I want to represent in my web page. So this is DT. Along with I had written HTML and what? Hypertext markup language. Copy this, paste it to Visual Studio Code. Okay, paste it to what? Visual Studio Code. Let's see. DT tag is there. So DT tag is there. Okay, so I will copy, save this application and copy the path and move to what? Visual Studio Code and paste it. Fine. So here's what is saying: HTML hypertext markup language. So it is showing that HTML is something in what? Definition term is what? HTML, and definition data is what? Hypertext markup language. Like I want to insert one more thing of, like say I want to insert what? DT, one more thing, like I want to insert like CSS. Okay, so I want to insert one more data term like CSS. So CSS is used to what? CSS cascading style sheet. Okay, cascading style sheet. So I will represent in this in data like cascading style sheet is what CSS mean. So we will be discussing what is CSS in after lessons also. Okay, so after that I am writing one more thing, DT. What is JS? JS is what? JavaScript. JavaScript script used to make
dynamic web application, dynamic web application, sorry, web application. Okay, fine. Use, not use, use to make dynamic web application. You will save this application and copy path and paste it, sorry, paste it here. Okay, so see, what is HTML hypertext markup language, what is CSS cascading style sheet, what JavaScript is JavaScript used to, JS is what JavaScript used to make dynamic web application. This is what ordered list. Order list in what, there is one A B C, like numerical order is what HTML CSS and JavaScript. Then where I was what working with an order list, what is that, it इसके आगे बस एक symbol लगा हुआ है, that is HTML CSS and JavaScript. Here is what, this is what working with definition list or description list. This is what HTML, which represent what hypertext markup language. Similarly CSS represent what cascading style sheet, and JavaScript represent what JavaScript used to make dynamic web application. Okay, so with this I want to wrap this session here only. So take care, goodbye.